everyone, Shalom and praise the Lord. We are all here today in the presence of our Lord Jesus Christ. And it is said, when two or more are gathered in my name, there I am. Yes, my dear brothers and sisters, we have gathered here in the presence of the God Almighty, our Creator, the King of Kings. His presence is among us. So, let us take this moment and say a short prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus, thank you for this day that you've given us. Thank you for bringing us all here today and blessing us with the gifts of wisdom, understanding, patience, love, and knowledge. Lord, bless our families and protect us with your precious blood from the evil that we may encounter in our lives. We make this prayer to Christ our Lord. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे घर का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। Amen. Praise the Lord. As I was preparing for my praise and worship, I started to pray and meditate on the Word of God. And I got these two lines from this hymn, which goes, Great and mighty is the Lord our God, great and mighty is He. And it was just these two lines over and over again. So I knew, okay, this has to be something. This has to be what I should be talking about. How great my God is. And as I opened the Bible, I got Joel chapter 3 verse 16, which said, The Lord roars from Mount Zion. His voice thunders from Jerusalem. Earth and sky tremble, but He will defend His people. That the word of God really touched my heart, because many times we make our problems seem bigger than our God. Many times we give up on God, saying, you are not going to help us, but we are God's children. He will always be there to protect us. We may not understand because we are children. Children do not understand everything. But God knows all, and He sees all, and He is so great and worthy of our praises. So let us sing praises and worship and sing His name as we sing this song. मेरा
से ऊंचा है यीशु नाम, हर पहाड़ों से, हर तूफानों से, आसमानों से, सारे नामों से, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, हालेलुया, 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 यीशुआ, हालेलुया, 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 यीशुआ, हालेलुया, 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 यीशुआ, हालेलुया, 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 यीशुआ. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Glory and honor to your name. Mighty is your name. Wonderful is your name. You're great. You are greatly to be praised, Lord. We bless your name, Lord Jesus. There is none like you, Lord God. You are the King of kings and the Lord of lords. Romans chapter 15 verse 36. May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. My dear brothers and sisters, as we sing this next song, let us call upon the Holy Spirit to take part in our lives, to be by our side as we walk the walk of life, to be in front of us, to lead us, to be behind us, to have our backs, and to be in our hearts, so that we may be compassionate, patient, and loving to the people around us. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. You're the living waters, never dying fountain, comforter and counselor. Take complete control.
never dying fountain, comforter and counselor, take complete control. You're the living water, never dying fountain, comforter and counselor, take complete control. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of us. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of us. Fill us with your power. Live inside of us. My dear brothers and sisters, let us close our eyes and feel the presence of the Lord in our homes. Let us raise our hands and reach out to the Lord. The first commandment says, I am the Lord your God, and you shall have no other God before me. And yes, Lord, we are your children, and we are going to keep away everything else and give you first priority in our lives, O Lord. Lord, sometimes we have failed to do that. Many a times we may have failed to give you first priority, Lord, but we are here to praise you, worship you, Lord, because there is no other God like you. No other God who has compassion and love like you, O Lord, for your children. We leave everything aside, O Lord, and we come to you, O Lord. You hold the highest place in our lives and in our hearts. All these pieces broken
once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to You take our failure, you take our weakness, you set your treasure in jars of clay. Take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your life in me. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. How I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Good evening, dear brothers and sisters, and praise the Lord. Let us give glory and honor to our Lord for blessing us with Sister Alisha Sarao and leading us into this wonderful time of praise, and which has helped us to experience God's presence. Thank you, Sister Alisha. May God bless you and your family. Today we have in our midst Sister Lian. Sister Lian is a secretary in Bombay Service Communion. She has served in St. Anthony of Padua prayer group from last 6 years. She is also a youth elder and works closely with the youth and has been an instrument in bringing the youth closer to our Lord. Today she is going to break the word with us on the topic of umbrella of God's protection. So welcome, Sister Lian, in the name of Jesus. Thank you, Sister Silorin. Can you hear me well? Yes, yes. Okay, fine. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise God, brothers and sisters in Christ. So today's topic we have is umbrella of God's protection. And when we look at this umbrella of God's protection, the poster itself shows how a person is holding his umbrella, and there is a wind blowing, there is rain coming, and we all know in
at this time of the season where we use the umbrella and how important an umbrella is for each one of us. Well, today I'm going to take you through, in contrast with umbrella, how God's love is for us and how his protection is for each one of us. So let's begin. We'll just look into this definition of what is an umbrella. The word umbrella comes from the Latin root word umbra, which means shade or shadow. छतरी जो है उसका मतलब है छाव, जो है जो हमें छाव देता है, shade और shadow. God himself is our umbrella. हम और हमारे एकमात्र परमेश्वर ही हमारे छाता है. So an umbrella is designed to provide protection from various elements. We all know it helps us to protect us from nature, of rain, of hail, of snow, wind, or sunshine. As long as a person is under an umbrella, he finds shelter from harsh weather conditions. If he steps out from under the umbrella, he exposes himself to an environment, to the different conditions which is going on. So यहाँ पर हमें कहा गया है वो छाता जो है हमें बारिश, ओले, बर्फ, हवा या धूप से बचाता है. और जब तक हम एक व्यक्ति अपनी छतरी के नीचे रहते हैं, वह कठोर मौसम की स्थिति से आश्रय पाता है. अगर वह छतरी के नीचे से बाहर निकलता है तो वह खुद को पर्यावरण के संपर्क में लाता है. So these elements correspond to the different difficulties in the surrounding. Like if we go to see satanic attacks, temptations, difficulty, और हम यहाँ पे देखा जाता है कि हमारी जो सराउंडिंग्स में, पर्यावरण में जो हो रहा है, शैतानी हमले, प्रलोभन, कठिनाइयां, जैसे कठिनाइयों के अनुरूप में है ये अम्ब्रेला हमें छतरी जो हमें रक्षा देता है. So I want to give you a small example of a family in contrast with God's protection. इसका उपयोग भगवान की सुरक्षा से के विपरीत करते हैं. We'll have the next slide. My dear brothers and sisters, you must have definitely out with your parents, yeah, when it was raining suddenly and you found yourself without an umbrella and your parents had an umbrella. You can see in the picture, we see a family under one big umbrella. Okay, so if you didn't have an umbrella, what would you do? You would go and run to your parents who are having that umbrella, because you would remain relatively warm and dry and you're secured in your parents' care. Yet sometimes, because of how sinners that we are, or we are inclined to the flesh, we like to have a little bit rain on our hands and our fingers. So we put our hands slowly outside the umbrella to see how the rain is, to experience a little bit of the rain. And slowly we get out of that umbrella and we realize, because the immunity cannot take it, we fall sick. And because we leave the protection of the umbrella, now we are totally wet and we are totally become a mess. And so it is with God our Father in the spiritual world. He has an umbrella. इसका तुलना मैं परमेश्वर के प्रेम के साथ करती हूँ. और यहाँ पे मैंने कहा गया है कि माता पिता और बच्चा जब भी बाहर जाते हैं और वहां पे जब भी बारिश होता है तो बच्चा तुरंत भाग के अपने माता पिता के साथ जाता है जिनके पास छाता है, ताकि वो बारिश से दूर रह सके. मगर क्या होता है कि हम कमजोर हैं और वो कमजोरी की वजह से हम क्या करते हैं, नहीं मुझे थोड़ा सा तो भी बारिश का अनुभव लेना है. हम अपना उंगली हाथ बाहर डालते हैं और फिर हम बाहर जाते हैं, उस छाता के बाहर जाते हैं ताकि हम उस बारिश का अनुभव ले सके. और हम यहाँ पर तुलना करते हैं परमेश्वर के प्रेम के साथ. God our Father in the spiritual world, He has an umbrella that's big enough to cover all His children. You know how many children? 7.8 billion of us. Yet it still requires a conscious decision to draw near to Him. हमें ये याद रखना है कि हमें हमेशा परमेश्वर की ये सुरक्षा चक्र की जरूरत पड़ती है, हमेशा. फिर भी यदि हम उनकी छत्र छाया में रहना चाहते हैं तो उनके निकट आने के लिए अभी भी एक संचेत निर्णय की आवश्यकता है.
outside of it, हमें पता है what happens outside of an umbrella. We will face all the temptations of the world, like alcohol, drugs, pornography, greed, pride, gluttony, envy, and countless other sins. इसके बाहर इस संसार के सारे प्रलोभन हम प्रतिदिन बरसते हैं, जैसे कि शराब, ड्रग्स, अश्लील साहित्य, लालच, घमंड, ईर्ष्या और अनगिनत अन्य पाप. So as we are sinful in nature, we might give into this desires of the flesh and think we want to experience the outside world. We need to remember one thing: the rain doesn't stop, the storm doesn't stop. ये बाहर का दुनिया में जो भी अनगिनत पाप है वो हमेशा बढ़ता रहता है, और हमेशा हमें दुख तकलीफ आते रहते हैं. जैसे हम पैंडेमिक देखते हैं, पैंडेमिक भी रुका नहीं, बढ़ता गया. मगर हमें क्या करना है अपने आप को सुरक्षित चक्र में रहने के लिए? लाइक द प्रोडिगल सन, वी नीड टू गो बैक टू द फादर. और वो प्रोडिगल लड़के के जैसे हमें वापस अपने पिता के पास जाना चाहिए. जो पिता जो है एक जेंटलमैन पिता है, वो हमें कभी भी फोर्स नहीं करते. He is waiting with his extended arms and he is waiting for us that we may come back to him. As the word of God says in Romans 5:8, God demonstrates his love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us. हम पापी थे, फिर भी वो हमारे लिए वो सूली चढ़ गए, ताकि उनके मरने की वजह से, उनके प्रेम की वजह से आज हमें अनंत काल का जीवन मिल सके. So, my dear brothers and sisters, let us see all throughout the world, we see various references to this protection and blessing upon his people. Exodus 13:21. For God, if you see in the word of God, if you see the poster, it shows, the Lord went before them. Israelites were 40 years in the desert, but God gave them protection for 40 years. He gave them direction to the nation of Israel through the cloud by the day and the pillar of fire by night. दिन को बादल और रात को आगे के खंबे के द्वारा, आग के खंबे के द्वारा वो परमेश्वर उनको राह दिखाते हैं. When the cloud moved, they moved. बादल जैसे आगे गया वो आगे बढ़ते गए. Those who lagged behind were attacked by their enemies and destroyed. और हम देखते हैं अगर हम झुंड में नहीं है, जो एक तह में नहीं है, तो क्या होगा? शैतान आके हमें नष्ट कर देगा, हमारा नाश कर देगा. इसलिए हमें वो झुंड में, परमेश्वर के तह में रहना बहुत जरूरी है. So when we look at the umbrella, okay, the next slide. When we look at the umbrella, we see the umbrella has many spokes. Okay, but today I would like to speak to you about only 6 spokes. मैं सिर्फ 6 तीलियों के बारे में बात करूंगी. And we are going to talk about in what ways we experience the God's protection. In what ways we experience God's protection. Yeah. So there are many ways, mentioned in the Bible, and there are many ways, many preachers have spoken to us, but I'm going to give you all 6 very important ways that we can be under the protection of God, which we experience God's protection. The first is God's word. Okay. Now there are 2 things in God's word which I'm going to talk about here. One is the spoken word and one is promises. Psalm 91:2 says, I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. परमेश्वर का वचन कहता है, मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वह मेरा शरणस्थान और मेरा गढ़ है, मेरा परमेश्वर जिस पर मैं भरोसा रखता हूं. Why spoken word? Unless we speak the word, we will not experience the word. My dear brothers and sisters, yes, I'm going to give you the crux of the whole thing, but here we see in 91 verse, Psalm 91:2, it says very clearly, अगर मैं वो शब्द नहीं कहूंगा, मैं उसका कार्य नहीं देख पाऊंगा. I will say of the Lord, मैं परमेश्वर के बारे में कहूंगा, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust.
Word of God says in James also, it says, your tongue has power. It has power of life and of death. That is why we need to open our mouth and say the word loudly. Yeah, the tongue has power of life and death. And that is why our tongue is very powerful, and we need to use our tongue for good things. Spoken word of God. Second one is the promises. Jeremiah 29:11. I'm sure all of us know this word of God so very well. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and a future, says Jeremiah. Well, we are assured of God's protection through God's word. My dear brothers and sisters, there are 8,000 promises in the Bible. Okay, we might know only 10 or 20 promises. But my dear brothers, I know there are people who literally write down the promises 365 days and they by heart those promises. I know of a person and who is reading these promises and by hearts. And literally when they pray also, these promises come to mind. These promises are very, very powerful. I would like to give you all two such testimonies. मैं एक दो गवाही बताना चाहती हूँ. मैं हिंदी में बताऊंगी. बहुत जब भी हम प्रार्थना सभा में मिलते थे, तभी युवक का सेल होता था और युवक के सेल में हम परमेश्वर का वचन पढ़ते थे और हमने सोचा था कि भजन गीत का हर एक भजन गीत एक दिन हम उसका इस्तेमाल करेंगे. और जब हम भजन गीत करते थे तो एक जो युवक थी जिसको अस्थमा था, वो भजन गीत करने लगे और हम लोग ने क्या कहा कि when we say the word of God we will say loudly. और हमने कहा जब भी हम वर्ड ऑफ गॉड जैसे परमेश्वर का वचन कहेंगे, हम जोर से वचन पढ़ेंगे क्योंकि हमें ये वचन को कार्य करने देना है हमारे जीवन में. तो हम ऐसे करने लगे. और ये बहन जो है जिसको आसमा था, से पता नहीं था कब क्या हुआ, मगर जब वो तो भजन गीत खत्म हुआ तभी उसने गवाही दी कि मुझे आसमा है मगर मैं चंगा हो गई, क्योंकि मुझे श्योर है कि मैं जब ये भजन गीत बोलने लगी, ये प्रॉमिसेस बोलने लगी, तभी परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया. आज तक वो बहन बिल्कुल ठीक है, उसमें कुछ भी आसमा का कुछ भी नहीं है. प्रेज द लॉर्ड. और सेकंड वचन जो है गवाही में देना चाहती हूँ. एक युवक है, हमारे भाई अभी बड़े हो गए, उनका शादी हो गया है, मगर हमारे प्रेयर ग्रुप में युवक थे. हम एक दिन वह आए थे प्रार्थना सभा में और कहने लगे कि मुझे किडनी स्टोन का प्रॉब्लम है. तो हम लोगों ने सब लोग ने डिसाइड किया कि चलो हमारे भाई आए हैं प्रार्थना सभा के लिए, क्यों ना हम प्रार्थना करते हैं प्रभु का वचन लेके. और उस दिन हम लोग ने सबने हाथ पकड़कर उनके ऊपर प्रार्थना की वचन के साथ, प्रॉमिसेस ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड. और दूसरे दिन उनका जो स्टोन था जो इतना बड़ा था वो टूट के नीचे निकल गया. और कितना अच्छा लगता है जब भी हम ये गवाही सुनते हैं, क्योंकि ये आश्वासन देते हैं कि प्रभु का शब्द जो है हमें प्रोटेक्शन देता है, हमें सुरक्षा देता है. His word is an umbrella of protection for our souls. Our faith and confidence has to be completely placed into the hands of the Lord. Don't forget, our faith grows by reading and hearing of the word of God. Romans 10:17. Without a good umbrella of faith, we will be cold, we will be wet, and we will be miserable when the storms come. Yes, so let's go to the second part. Second part is the blood of Jesus. Here we know we had this topic on the blood of Jesus in our prayer meeting. So I'm not going to talk much, but we all know the power in the blood of Jesus. We know that the blood of Jesus can set us free from every bondage. We know that the blood of Jesus protects us from sin. We know that the blood of Jesus always delivers from every bondage. If we can see the poster, we can see in the Old Testament in Exodus how during the last plague, which God tells the Israelites to put the blood of the sheep on their lintels, on their doorposts, and how the angel of death which crosses their doorposts, and every firstborn of the Egyptians die, including Pharaohs. And we see how Israel is saved. Okay,
So my dear brothers and sisters, the blood of Jesus is a powerful element which protects us. So I'm going to give you all one more example. When Cain killed Abel, we know all about Cain and Abel. हमको Cain और Abel के story के बारे में पता है. When Cain killed Abel, Abel's blood cried out in vengeance. जब केन ने एबल को मार डाला, तभी एबल का खून प्रतिशोध में परमेश्वर को चिल्लाया, सिर्फ पुकारा नहीं, चिल्लाया. Okay, and how much more will Jesus's blood cry out to God the Father for us? कितना पुकारेगा परमेश्वर का यीशु का खून हमारे लिए, हमारे क्षमा के लिए और हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, हमें रक्षा देने के लिए. Again here I'm going to say one thing very important. It is not just talking of the blood of Jesus, it is applying the blood of Jesus. जब हम परमेश्वर के लहू को, यीशु के लहू को हम पर डालते हैं, तब हम वो कार्य, वो हम देखेंगे, जो वो रक्षा हम देखेंगे, वो सुरक्षा कवच देखेंगे. Application of the precious blood of Jesus is very important. Why? Because it's not the blood of human being. किसी साधारण मनुष्य का ये खून नहीं है, मगर it's the blood of God. ये परमेश्वर का, यीशु का खून है. By this blood we were redeemed, we were sanctified. इसी खून के वजह से आज हमें अनंत काल का जीवन प्राप्त हुआ है. Satan has absolutely no power because we are protected. शैतान को हमारे ऊपर कोई शक्ति नहीं है क्योंकि हम सुरक्षित हैं पवित्र लहू के द्वारा. My dear brothers and sisters, that is why during every personal prayer you need to start your prayer by applying the precious blood of Jesus right from the crown of your head to the very soles of your feet. Right when you do intercession, when you pray for others, apply the blood of Jesus right from the crown of your head to the very soles of your feet. When you are doing any food, take the precious blood of Jesus, apply it to the nook and corner of your home, apply it to your to your food, apply it to your problems. You will see the power of the blood of Jesus. So let us go to the third point of experiencing the God's ways in our lives. You know, how God's protections in our life. The third part is the name of Jesus. Okay, we also had the topic of the name of Jesus in our prayer group. We all know how the name of Jesus works in our lives, right? The word of God says in Acts 4:11, there is no other name under heaven that has been given among men which we must have, which we must be saved. There is no salvation in no one else but the name of Jesus. And we all know how strong, how powerful the name of Jesus is. Yeah, we all know. The word Jesus itself, the Greek male name meaning is Savior, Rakshak. Uska matlab Rakshak hai. And we see this word of God in, I'll take you all to one more word of God. John 17:11 says, I will remain in the world no longer, but they are still in the world, but I'm coming to you, Holy Father. Protect them by the power of your name, the name you gave me, so that they may continue to be one as we are one. And see, in going forward, we see what Jesus is saying. My prayer is not that you take them out of the world, but that you protect them from the evil one. So many times, all the prayers that we make are made in the name of Jesus. हम सारा प्रार्थना अंत करते हैं यीशु के नाम में. The name of Jesus, जो यीशु का नाम है, हमें मुक्ति देता है, हमें सुरक्षा देता है और हमें वो सेव करता है, वो हमें सेव करता है. It saves us from everything. वो सुरक्षा और रक्षा देता है. Many saints, whenever they have experienced any evil spirits, they use the name of Jesus. And you see the devil running away at the name of Jesus. We have seen that in the word of God also, right? When Jesus has done his exorcism, all is because of his name. Amen. So the fourth topic here we are going to take how we experience God's protection. In the fourth one is on sacramentals. My dear brothers and sisters, you might say, शायद ये अंधविश्वास है, but I'm telling you, this is not अंधविश्वास.
blessing of water and fire is done in Easter time, right? And we see holy water, holy salt, holy oil, even the crucifix. We have the crucifix on our altar, right? Pavitra jal, namak और तेल. Our entire faith is built on traditions. हमारी पूरी आस्था परंपराओं पर टिकी है. And during the time of exorcism also we see that the priest will use the holy water. शैतान को भगाने के लिए, बुरी आत्मा को भगाने के लिए पुरोहित जो है पवित्र जल का इस्तेमाल करते हैं. The sacramentals are given for a purpose. Let us remember this. ये जो sacramentals है हमें एक प्रयोजन के लिए दिया है. Like water is a symbol of purification. हम जब भी रिट्रीट जाते हैं, पहले ही दिन रिट्रीट के वहां पर पुरोहित और जो हमारे पवित्र नन जो रिलीजियस है वो होली वाटर छिड़कते हैं ताकि वो जगह पवित्र हो जाए, हमें शुद्धिकरण मिले. So we see like water is a symbol of purification. So when we sprinkle it, we cleanse ourselves, inviting God's presence. हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाते हैं. That's like a protection. सुरक्षा कवच है हमारे लिए. Some people put blessed salt in the four corners of their house. कुछ लोग पवित्र नमक भी लेके अपने घर में छिड़कते हैं चारों बाजू ताकि वो दुष्ट आत्मा से दूर रहे. The fact that it is blessed and consecrated, it's no longer ordinary because it belongs to God. जैसे जल शुद्धि का प्रतीक है, Satan cannot come or do anything. He has no authority, no power. शैतान कुछ भी नहीं कर सकता है क्योंकि उसके पास कोई शक्ति नहीं है और उसे केवल तभी शक्ति मिलती है जब आप और मैं उसे अनुमति देते हैं. Very important part, my dear brothers. If we get out of that umbrella, we are giving permission to that Satan. So very important. I'm going to say this again and again so that we remember that we need to be in that Suraksha Kavach of God's umbrella. Amen. We'll take the fifth point of God's protection, and that is sacraments. My dear brothers and sisters, I'm sure we all know how the sacraments so wonderfully helps us. Okay, baptisma, misa balidan, paap svikar, confirmation, that is pushtikaran, and anointing of the sick, bimaro ka abhishek. I've not taken matrimony, but yes, matrimony also is there, which I'm going to be talking about in a very one line. But all these sacraments are a protection for each one of us, my dear brothers and sisters. The sacramentals help the sacraments grow much further. Let us see how. Sacrament is a sign of grace, which is free gift from God. Sacrament जो है एक अनुग्रह है, हमें जो मुफ्त का तोहफा परमेश्वर से मिलता है. In the sacraments, when we are baptized, we are sealed with holy oil. बपतिस्मा के वक्त हमें पवित्र तेल के साथ पुरोहित हमें चिन्ह निकालते हैं क्रूस का. We are marked by God. Same thing when we are confirmed. Okay, वहां पर भी पवित्र तेल का वहां पर इस्तेमाल किया जाता है. और वो इस्तेमाल का मतलब क्या है? हम पवित्र आत्मा के सुरक्षा कवच के अंदर आ गए हैं. पवित्र आत्मा जो हमें बपतिस्मा में मिला है, मगर कॉन्फर्मेशन में हमारी हाँ के वजह से हम अफर्मेशन देते हैं. हमारी हाँ के वजह से पवित्र आत्मा हमें काम करना, हम उनको काम करने की अनुमति देते हैं. Now we see in the Eucharist, मिसा बलिदान में क्या होता है? यीशु स्वयं आके हमारे बीच में रहते हैं. If Christ is for us, who can be against us? Romans 8:31. Okay, and in the sacrament of matrimony, one very important thing that we don't realize, my dear brothers and sisters, the husband and the wife and the third person is Jesus, not the third person, but with Jesus, the husband and wife become one. Suraksha Kavach of Jesus. And as long as they are one, no outsider can come and enter into that, nor even the children. But as long as दरार आती है, हम शैतान को काम करने देते हैं.
और वो सुरक्षा कवच में बहुत रहना बहुत जरूरी है, वो प्रेम का सुरक्षा कवच है। द सेम वे फॉर द अनॉइंटिंग ऑफ द सिक, जो बीमारों की अभिषेक है, सिर्फ जो मरने वाले हैं उनको हम अनुग्रह नहीं करते हैं उस पवित्र तेल के साथ, मगर जो पुरोहित है वो जाके बीमारों को भी अनुग्रह करते हैं उस पवित्र तेल के साथ। क्यों करते हैं? ताकि वो चंगाई पा सके। चंगाई का मतलब ये नहीं कि वो तुरंत ठीक हो जाएंगे, कभी कभी मृत्यु भी हो जाता है, वो भी एक चंगाई है, क्योंकि हम मरते हैं तो हम अनुग्रह में मरते हैं, पाप में नहीं मगर अनुग्रह में मरते। इसलिए ये अनॉइंटिंग ऑफ द सिक बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। ये सारे जो सैक्रामेंट्स मैंने बताए गए हैं वो एक सुरक्षा कवच है। इस द्वारा हम पवित्र परमेश्वर का सुरक्षा कवच पाते हैं, और अगर हम ये सुरक्षा कवच में रहेंगे, शैतान कभी कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर हम अनुमति नहीं देते तो कुछ कभी नहीं कर सकता, क्योंकि वो सुरक्षा कवच के अंदर है। Okay, and the sixth point, very important point, which many of us don't take, is the church. Okay, here I will like to talk to you about the CCC, Catechism of the Catholic Church, 169. We know that salvation comes from God. उद्धार केवल परमेश्वर से ही आता है. But the life of faith through the church, we receive the life of faith through the church. She is our mother. हमें ये जीवन चर्च के द्वारा मिलता है। क्यों? क्योंकि वो हमारी माता है। And I'll read the last line. Because she is our mother, she is also our teacher in the faith. Let me tell you, my brothers and sisters, मेरे भाइयों और बहनों, विश्वास का शिक्षिका हमारा चर्च है, हमारा कलीसिया है। Let us remember one thing, हमें विश्वास कहाँ पे मिली है? चर्च में मिली है। जब से हमारी हमसे फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके कॉन्फर्मेशन तक हम विश्वास कहाँ सीखते हैं? चर्च में सीखते हैं। इसलिए हम चर्च को माता कहते हैं, और वो हमारी विश्वास का शिक्षिका है। हमें ये याद रखना है। हम आई बिलीव में भी बोलते हैं, जब भी बोलते हैं हम विश्वासी, जब भी बोलते हैं आई बिलीव इन वन होली कैथोलिक अपोस्टलिक चर्च। और ये चर्च कौन है? आप और हम चर्च है। You and me are the church. We make the church together. Where 2 or 3 are gathered in the name of Jesus, Jesus is there. जहाँ पर 2 या 3 परमेश्वर की उपस्थिति में, वहां पे परमेश्वर है, यीशु है। याद रखना बहुत जरूरी है। As long as we stay within the church, बहुत जरूरी है। जब तक हम वो कलीसिया के सीमा में रहते हैं, we are protected, हम रक्षा में है, सुरक्षा है। Just like a sheep in the sheepfold. If we are detached from the sheepfold, अगर हम भेड़शाला से दूर चले जाते हैं तो भेड़िया आके हमको खा जाएगा, हमें नष्ट करेगा। मगर हम एक तह में रहेंगे, चरवाह के साथ रहेंगे, हम हमेशा सुरक्षा पा सकते हैं। Praise the Lord. तो यहाँ पे हम 6 चीज ऐसा सीखा है। हमने क्या क्या सीखा है? We have learned how we experience the different ways of God's protection. First is the word of God, spoken word promises. Okay, we have वादे और बोले गए शब्द। दूसरा जो है blood of Jesus, यीशु के लहू से। तीसरा जो है name of Jesus, यीशु के नाम से। चौथा जो है sacramentals, पवित्र जल, पवित्र नमक और तेल से। पांचवा जो है sacraments, बपतिस्मा, यूक्रिस्ट, कॉन्फेशन, कॉन्फर्मेशन, पुष्टिकरण और बीमारों की अभिषेक से। और छठा जो है चर्च, हमारा कलीसिया के द्वारा हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, हम प्रोटेक्शन ऑफ गॉड एक्सपीरियंस, प्रभु का सुरक्षा कवच हम महसूस कर सकते हैं। Okay, my dear brothers and sisters, now the very main point, I'm coming to the very main point of this whole lesson that we are learning. How do we remain in God's protection? You can see here, the poster says, the slide says, in case of emergency, call 911. Does anything tinkle in your head? In US, this is a helpline number. Auntie Angela will know this very well because she has been there. But this is a helpline number. Anything, whether they have to call the fire brigade, they have to call the police, they have to call anyone, that is only one number, and that is 911. Okay.
Now this protection will be of no use to us if we do not use our hands to hold the umbrella. If we do not use our hands to hold the handle of the umbrella, very important. Umbrella cannot fly and be on us, right? We have to hold the umbrella, the handle of the umbrella. So what's important is not just claiming the word of God, claiming the promises of God, okay, but remaining in his protection. How can we reach out and hold on to God's hand? अब यह सुरक्षा हमारे किसी काम की नहीं होगी यदि हम अपने हाथों का उपयोग छतरी के हैंडल को पकड़ने के लिए नहीं करते हैं। तो जो महत्वपूर्ण है वह सिर्फ भगवान की सुरक्षा का दावा नहीं करना, बल्कि उनकी सुरक्षा में रहना है। हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं और परमेश्वर का हाथ थामे रह सकते हैं? Let us see this. Word of God says in Isaiah 41:10. It says, "Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my right hand." What is the word used? If he who dwells in the shelter of the Most High, dwells, रहना, बातें करना नहीं, रहना, यीशु के मध्यस्थी में रहना, उनके बीच में रहना, यीशु के साथ रहना, परमेश्वर के साथ रहना. If you dwell in the secret place and abide under the shadow, मैंने पहले भी कहा था, अम्ब्रेला जो छाता का मतलब है छाव, और छाव का मतलब क्या है? शैडो. If he who dwells in the shelter of the Most High will abide in the shadow of the Almighty. अगर हम परमेश्वर में रहे तो फिर हम परमेश्वर में एक हो सकते हैं उनके छाव के नीचे. And we will be under his wings, under the umbrella of the Almighty. God will be our deliverer. परमेश्वर हमारा मुक्तिदाता है. Unless we dwell, we cannot abide. My dear brothers and sisters, unless we dwell, we cannot abide. We cannot experience his protection. Let me tell you. But God is a loving Father. God, we cannot, now I'm saying this, but God is a loving Father. He does not make any tulna. He does not see, acha, tumne you said for personal prayer, okay, fine, then I will protect you. No. Call upon the Lord and he answers you. God, whenever you call upon God, he will answer you. But this is a very important factor. This is the core of everything. ये सबसे महत्वपूर्ण है. ये सबसे महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये कोर है, ये क्रक्स है, पूरा साम का क्रक्स है. Okay, let us see what it says. Relationship with the God is utmost priority of our life. सर्वोच्च प्रथम हमारे जीवन में परमेश्वर के साथ ये रिश्ता बनाए रखना. For us to remain in God's protection is to be consistent and remain in his presence. हमारे लिए परमेश्वर की सुरक्षा में बने रहना है, तो लगातार बने रहना है, तो उनकी उपस्थिति में बने रहना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. इसलिए हमें कहा गया है हमारे इंटरसेशन टीम में, हमें सिस्टर स्मिता हमेशा कहती है पर्सनल प्रेयर में बैठना है और फिर यहाँ पे इंटरसेशन करने आना है. बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हम पर्सनल प्रेयर नहीं करेंगे तो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, शैतानी हम we can be against, we are fighting a spiritual warfare. Let us know this. हमें इसलिए प्रभु के उपस्थिति में बैठना बहुत जरूरी है. And if you see the psalm, if you read this whole psalm, you see the whole, right from second to the last part of the psalm, I will deliver him, honor him, long life will satisfy him, show my salvation. It is all based on Psalm 91:1. If you do not sit on Psalm 91:1, अगर हम प्रभु के उपस्थिति में नहीं बैठेंगे तो हमें ये दूसरा पूर्ण पाठ का हमें लाभ नहीं मिलेगा. Okay, and how is that done? That is done through personal prayer and worship. Okay, it is done to worship. So let us see. When we worship God, God's presence dwells there, and where there is God's presence, no evil spirit can stand over there. We had our first retreat. Very important. We learned how to worship the Lord.
We learned how to sit in His presence. There is no time, my dear brothers and sisters. Fix a time every day to sit in His presence. Fix a time anytime, whether you morning, whether you afternoon. Housewives can sit in the afternoon. Probably they have to do full day work. Afternoon, if you're free, sit down. Fix a time, fix a place. Sit in the presence of the Lord. Probably you're too tired, you can't talk that particular day. Just sit in His presence in silence. The Lord will minister to us. परमेश्वर हमें देखभाल करते हैं. वो बहुत दयालु परमेश्वर है. प्रेमदायक परमेश्वर है. He loves us so much. Fix a time, my dear brothers and sisters, and sit in the presence of the Lord. And start with, at least, I would not say 15 minutes, start with half an hour. If you are doing 15 minutes praise and confessing and surrenderance, 15 minutes should be totally silence. It's a dialogue. It's just not one person speaking. It's a dialogue, my dear brothers and sisters. It is not one person speaking. Let me tell you this. So that is why we need to sit in the presence of the Lord. Why am I talking so much about this? Because this is the core. ये सबसे महत्वपूर्ण है. इसके बिना कुछ भी नहीं है मेरे भाई और बहनों. हमें हमेशा कहा गया है, अगर आप व्यक्तिगत प्रार्थना में नहीं बैठोगे, आप अब प्रभु क्या कहना चाहते हैं आपको आप नहीं जान पाओगे. मैं आपको खुद का एक टेस्टिमनी गवाही देना चाहती हूँ. मेरी एक दोस्त है जो बिजनेस में आगे बढ़ना चाहती थी, और वो मुझे हमेशा बोलती थी कि क्या करेगी लियान, मेरे को करना है, मुझे करना है, पता नहीं क्या करना है, ये करना है, वो करना है, ये करना है. मैंने बोला क्या तुम व्यक्तिगत प्रार्थना में बैठती हो? तो बोले बैठती हूँ, मगर मेरा व्यक्तिगत प्रार्थना में मेरे को बहुत सारे विचार आते हैं. मैं बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, विचार आएंगे ही, स्टार्टिंग में विचार आएंगे ही, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मगर व्यक्तिगत प्रार्थना में बैठे रहना बहुत इंपॉर्टेंट है. कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी क्या हो रहा है, विचार आएंगे तो क्या करना है, फिर से परमेश्वर की ओर हमें ध्यान लगाना है. क्योंकि उसको स्टार्टिंग में बहुत तकलीफ हो रही थी प्रार्थना में बैठने के लिए, तो मैं भी बैठने लगी उनके साथ, और हम दोनों बैठने लगे अलग अलग, मगर बैठने लगे. और हमने देखा कि हमारा जो टाइम था आधा घंटा से 45 मिनट से 1 घंटा में होने लगा, 1 घंटा होने लगा. और हमने देखा कि परमेश्वर फिर हमसे बात करने लगे. आज मेरी बहन जो है जो बिजनेस चालू करना चाहती, वो उसको पता नहीं था कहाँ पे आगे बढ़ना था. आज उसे पता चला कहाँ पे आगे बढ़ना है, और परमेश्वर की हाथ उसके ऊपर है. इसलिए मैं ये गवाही क्यों दे रही हूँ, क्योंकि आप जान पाओगे परमेश्वर क्या चाहता है, आपको क्या करना चाहिए. हमें दुख तकलीफ होती है, पहले हम फोन लगाते हैं इधर उधर, बट परमेश्वर का वचन कहते हैं कॉल अनटू मी एंड आई विल आंसर यू. मुझे कॉल करो, और वो कॉलिंग नंबर है व्यक्तिगत प्रार्थना. कॉलिंग नंबर क्या है? व्यक्तिगत प्रार्थना. साम 911 बोलते हैं ना, इमरजेंसी कॉल 911 वो कॉलिंग नंबर है. हमें व्यक्तिगत प्रार्थना में बैठना पड़ेगा परमेश्वर के साथ. और ये गवाही एक ही गवाही है जो अभी हुआ है, इसलिए मैं गवाही दे रही हूँ. और बहुत सारे ऐसे गवाही है जहाँ पे मेरे युवकों ने महसूस किया है. मैंने भी उनको भी मैं जब भी मेरे युवकों को मिलती हूँ, मैं उनको सिर्फ ये चीज सिखाती हूँ, व्यक्तिगत प्रार्थना. मेरे भाइयों और बहनों, the only true way to fully walk in the total protection of God and well under the flow of His blessings is to do in obedience. आज्ञा में रहना बहुत जरूरी है. Let us today promise God. Let us make a commitment, my dear brothers and sisters, all of us. Let us make this commitment and tell Jesus, I promise you. मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं रोज ये टाइम पे व्यक्तिगत प्रार्थना में बैठूंगी. वो दिन भले आप खाना मत खाओ, मगर व्यक्तिगत प्रार्थना में बैठो. देखो कितना आपको आशीर्वाद मिलेगा. Obedience is the key to living with God's best in your life. आज्ञाकारी लोग वो होते हैं जो परमेश्वर को अगर एक टाइम हमने प्रॉमिस किया है तो हमें वो करना ही है. बड़बड़ करने से नहीं होगा. प्रभु के उपस्थिति में बैठेंगे,
प्रभु को जानेंगे, जब तक हम प्रभु को नहीं जानेंगे, उनका शब्द हमें कार्य नहीं कर पाएंगे। क्योंकि क्या है, जब हम प्रभु के शब्द में उपस्थिति में बैठते हैं तो वो हमें शब्द सिखाते हैं। He teaches us, he explains to us, he gives us insights to the word of God. So my dear brothers and sisters, I will end this particular talk by saying, if we haven't been sitting in personal prayer, अगर हम व्यक्तिगत प्रार्थना में नहीं बैठ रहे हैं, ये निर्णय लेते हैं कि आज व्यक्तिगत प्रार्थना में बैठेंगे और ये प्रभु का प्रोटेक्शन, जो सुरक्षा कवच है, उनका छाता जो है हम पर हमेशा बने रहे। This let us close our eyes at this moment, my dear brothers and sisters. Let us close our eyes and let us remember God is in charge of this time, of this moment. He loves us very much. He loves us so much that today, let us in response tell him, I love you too, Father, Son, and the Holy Spirit. But Lord, I have failed so many times to experience this umbrella of yours. Father, we have learned today about how you have always been there like this umbrella, shielding us from all bad influences of the world. We are sorry for all the times when we have not given you that first place. प्रथम स्थान नहीं दिया है परमेश्वर आपको. And we have dwelt upon our faulty umbrellas with holes, umbrellas of this world, umbrellas of wealth, umbrellas of property, umbrellas of our salary, umbrellas of our job. Yes, Lord, we have looked on these faulty umbrellas. Have mercy, Father. Fill us with your presence. Even as we make a commitment to hold your hands, to walk this path under your protection daily. And we make this prayer in Jesus' name. And all the loving and the blessed and the awesome children of God said, Amen. Amen. Thank you, Sister Leanne, for your precious time and awesome teaching on umbrella, the God's protection. How God can protect us through God words, through blood of Jesus, through name of Jesus, and then too through our sacraments. And then too you had given us the nice number for the protection, which that is none other than Psalm 91 verses 1. Thank you, Leanne sister, for your time, and may God bless you and your family.